Every human being has born with some special muses, with special arts, with special skills. The only thing that he needs to understand is the art of observation. Once he will start observing what exactly he has born for, his ways of success emerge from that stage only. The worst enemy of a human being is comparison. जब आपने अपने आप को कंपेयर किया है ऑलरेडी उस इंसान के साथ जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वो बहुत अमीर है, मैं बहुत गरीब हूँ, उसके पास बहुत दौलत है, मेरे पास नहीं है, वो हमेशा गाड़ियों में चलता है, मैं नहीं चल पा रहा। एंड हियर आपका साइकोलॉजिकल डिप्रेशन शुरू हो जाता है, आपकी मेंटल एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली मर्डर हो जाती है। एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जो उसे ज़िंदगी के किसी भी मुकाम में, किसी भी रास्ते पे पहुंचा सकती है, कामयाब बना सकती है। आप गरीब हैं तो हैं, आपके पास पैसा, रुपया, दौलत, शोहरत, ये सारी चीज़ें नहीं है तो नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। Once you will start accepting all these things, and you will completely be satisfied with the goal that you have made for yourself. Society is there, they will start criticizing you, they will start blaming you, they will start alleging you, वो आपके ऊपर लांछन लगाएंगे, वो आपको हमेशा गालियाँ देंगे, वो आपको हमेशा बुरा भला कहेंगे, because this is a part of our society and society has been emerged with these things. But you have to understand that these things will never last forever if you won't carry them in your head forever. क्योंकि इस पूरे क्रिटिसिज्म को, इन पूरे एलिगेशंस को, ब्लेम्स को अगर आपने हमेशा अपने दिमाग में, अपने जहन में पाला, तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाए। Living in a society and ignoring the social structural bondings is very much important. A human needs to understand the art of ignorance also. If you don't have the skills how to ignore the comments that are filled with negativity, you will never ever be successful. People are there to criticize you, if you will do good or you will do bad. The only thing is that once you will start ignoring those comments, once you will start ignoring those blames and those criticisms, you will definitely make a way for your success. अगर आपने उन तमाम चीज़ों को हमेशा अपने जहन में ले लिया, तो you will be the victim and you will be the patient. For example, अगर मैं इस मोबाइल फ़ोन को as a problem की तरफ ले लेता हूँ, and if I will keep it like this for 1 hour, it might be possible it won't create a problem. But if I'll keep it for 1 day, इसे मैं 1 दिन के लिए रखता हूँ, तो it's possible कि मुझे next day फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। In the same way, the brain works on the same module. In the same way, the human life works on the same module. If you will carry your problems for a longer time with you, in your head, if you will carry the criticism that is made by other people for longer time in your head, you will be the victim. You need to understand it, work on it, throw it out, make the ways for your success. The future will be waiting for you.